Neuro-linguistic programming. Programming brain through language. Deep understanding आती है अपने मुतालिक, अपनी जात के मुतालिक और दूसरों के मुतालिक. This is one of the first things. Hello, this is Dr. Richard Bandler. This is John Laval. I'm the president of the Society of NLP with Richard Bandler. Hi, I'm Owen Fitzpatrick, co-author of the book Memories with Dr. Richard Bandler and co-founder of the Irish Institute of NLP. And I'm very delighted to highly recommend Kamran Sultan of the First Institute of Dynamic Learning in Pakistan. Kamran is someone that I've seen train. I've worked with him and taught a workshop with him in Pakistan. And he's someone that has exquisite skills, one of the best NLP trainers I've seen. And it's an honor to work with someone of his caliber. If you think about Kamran Sultan, he is fantastic. And I highly recommend him for doing his seminars in your country. And I also want to say that he's been doing NLP for quite a long time, actually. Was trained by Richard many, many years ago. He's come to the United States to update his training, and he's really a great guy. If you've got the opportunity to study with someone like him, like Kamran in Pakistan, in NLP, you won't find any better. So I highly recommend, if you want to learn NLP, learn from the best in Pakistan, learn from Kamran. Okay, so go see Kamran Sultan. He's a great guy, and he does fantastic programs. And if you're getting training in Pakistan, I want to recommend that you train with Kamran. Assalamualaikum everyone. Welcome to this session. We are starting now. I'm 10 minutes late start कर रहे हैं. And हमारा आज का जो session है, this is about, इसका जो topic है, as you know, it's mind mastery. This is about controlling your brain and controlling your emotions and your feelings. You see, जिंदगी में हम कुछ भी करते हैं, हर चीज डिपेंड करती है कि हम अपने आप पे कितना काबू रखते हैं. यानी सोचो, छोटी सी चीज है कि हमारे सामने कोई खाने की चीज आती है और वो देखकर हमें इतनी एकदम अट्रैक्टिव लगती है, इतनी होती है, इट्स लाइक वी जस्ट वांट टू ग्रैब इट. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स हम ऐसी चीजें खा लेते हैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि इवन वो चीज हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है. ओके, सो इट्स लाइक बजाय इसके कि हम अपने आप को कंट्रोल करें, हम वो छोटी छोटी सी चीजें, एक छोटी सी गुलाब जामुन हमें कंट्रोल कर रही है. ओके, एक छोटा सा केक पीस हमें कंट्रोल कर रहा है. आज चाय नहीं मिली तो हमारा मूड खराब है. आज हमें आज सिगरेट नहीं पिया तो हमारा दिमाग जो है वो कंट्रोल में नहीं है. सो अ लॉट ऑफ पीपल लिव देयर लाइफ लाइक दैट. एंड इट्स लाइक जैसे इंसान जो इंसान नहीं बल्कि एक कठपुतली बनने वाला है और एक कठपुतली की सी जिंदगी गुजार रहा होता है. सो आज का जो सेशन है, इसमें जो चीजें आप सीखेंगे, इन चीजों को प्रैक्टिस करें और रेगुलरली जब आप प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल नोटिस इसके मेजर डिफरेंसेस. अगर आपने मेरे पिछले सेशंस अटेंड किए हैं तो मैंने जिक्र किया है, लाइक बिकॉज ये सारी चीजें जिन चीजों पे मैं काम करता हूँ, उनका ताल्लुक शऊरी जहन से नहीं होता है, इनका ताल्लुक लाशऊरी जहन से होता है, जिसको आप अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं. सो हमारा जो जहन है, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड, उसने एक तरीका सीख लिया है चीजों को ऑर्गेनाइज करने का, चीजों को कंट्रोल करने का, और इट मे और मे नॉट बी वर्किंग फॉर अस. सो हम इन चीजों को, जो चीजें हम आज के सेशन में सीखेंगे, इन चीजों को इंशाल्लाह जब आप इस्तेमाल करेंगे, then you will find that you will have more control over things. Now, before we begin, I would like to see कि आज के सेशन में हमारे पास लोग कहाँ से हैं, because ये YouTube लाइव जा रहा है. इवन दो अगर आप आज की इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, that's perfectly okay. आप इस सेक्शन को चंद 1-2 मिनट आगे बढ़ा सकते हैं. लेकिन I would like to know कि जो लोग मेरे साथ YouTube पे इस वक्त लाइव कनेक्टेड हैं, कहाँ से हैं. And so let's find out. तो YouTube पे काफी सारे लोगों के अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. एंड
I see. You can post your questions as well on YouTube. मैं Zoom पर हूँ, so मैं चंद सेकंड बाद आपके पास मेरी ट्रांसमिशन आ रही है. आई थिंक 10-15 सेकंड का गैप होता है. सो उस पीरियड में आपने जो लिखा होगा, आई विल रीड दैट एंड इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस इफ आई कैन. मेरे पास हर सवाल का जवाब नहीं है, किसी के पास हर सवाल का जवाब नहीं होता, लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल है जिसका मैं जवाब दे सकता हूँ और अगर वो आज के सेशन से रिलेवेंट होगा, देन आई विल आंसर दैट. लेकिन जिस चीज का सवाल में का जवाब मेरे पास नहीं है और आज के सेशन से रिलेवेंट भी नहीं है, आई विल नॉट आंसर दैट. ओके, सो आई सी देयर आर पीपल फ्रॉम many different places: Pakistan, Saudi, Lahore, Edmonton, Canada, Lucky Marwat, Karachi, Lahore. There is someone who's making a comment. Sir, your voice and question mark. It's like आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Because अगर आप किसी को नहीं आ रही आवाज, so this is an indication कि आपके अपने सिस्टम में, बिकॉज दूसरे लोग मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, आई अज्यूम कि आपको मेरी आवाज आ रही है. So Kamran Shabir has a question. I'll answer questions towards the end. So Kamran, आपका question जो है वो पीछे कहीं चला जाएगा. So hold your questions and I'll answer questions towards the end. So ask questions at the end because अभी जो questions आप कर रहे हैं वो ऊपर चले जाएंगे and I'll not be able to respond to them. So let's begin. Okay, so just a moment. Let me make few adjustments. जब ये आप ऑनलाइन होते हैं तो इसके अंदर मुसलसल कोई ना कोई टेक्निकलिटीज चलती रहती हैं. So I would like you to understand few things. हमारा जो हमारा जो जहन है, इसकी कंडीशनिंग के लिए, इसकी प्रोग्रामिंग के लिए चंद शराइत हैं कि मैं उनकी डिटेल में इस सेशन में नहीं जा सकता, लेकिन मुख्तसरन जो चंद शराइत हैं उनमें से एक मेजर शर्त है, एक मेजर जो कंडीशन है वो है रिपीटिशन. ओके, हम एनएलपी में एक बात कहते हैं, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ स्किल. किसी भी चीज को मास्टर करने के लिए, किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए यू नीड रिपीटिशन, 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 रिपीटिशन. आप जितना ज्यादा उसको रिपीट करते हैं, वो रिपीटिशन से आपके जहन में जो पैटर्न है, मैंने प्रॉस्पेरिटी कोचिंग में जिक्र किया था, इफ यू रिमेंबर, हमारे जो यूनिट्स लाइक जैसे कच्ची मिट्टी है, अगर आप उसमें पानी फेंकते हैं तो पहली बार जब आप पानी फेंकते हैं वो सारा उसमें बैठ जाता है, लेकिन अगर आप उसमें दोबारा पानी फेंकते हैं तो थोड़ा सा पानी रुकेगा और ज्यादा बैठ जाएगा, और आप बार बार पानी फेंकते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि वो पानी जो है एक रास्ता बना लेगा और फिर आप उसमें जब भी पानी डालेंगे तो वो उसी रास्ते के ऊपर चलेगा. सो ये एक मैंने एक मिसाल दी थी कि हमारे ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस इसी तरह से डेवलप होते हैं और वो कनेक्शंस जब रिपीट होते रहते हैं तो रिपीट होने से वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब वो स्ट्रांग होते हैं तो हमारे जहन का एक पैटर्न डेवलप हो जाता है. सो हमारे जहन में जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी एक अंदाज में एक पैटर्न डेवलप हुआ है. अगर हम चाहते हैं एक नया पैटर्न डेवलप करें, जो कि आज हम सेशन में कुछ टेक्निक्स जो करेंगे उन चीजों के लिए होगी, तो उसको हमें दोहराना पड़ता है, उनको हमें रिपीट करना पड़ता है, और इनको रिपीट करने से हमें चीजें क्लियर होती हैं. और रिपीटिशन इज द मदर ऑफ स्किल, रिमेंबर दैट. सो इसलिए जो भी कुछ आपको मैं सिखाऊंगा, इसको आप रिपीट करें तो फिर आपको इसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा. दूसरी चीज ये कि एनएलपी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप बैठ के नोट्स लें और नोट्स लेने के बाद आप सोचें किसी वक्त इसको पढ़ूंगी या पढ़ूंगा और फिर इससे कुछ फायदा उठाएंगे. इट डजंट वर्क दैट वे. ओके, सो यू नीड टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स. जैसे मैं आपको प्रोसेसेस कराऊंगा तो आप उनको साथ साथ करेंगे, देन आपको वो चीज बेस्ट समझ में आएगी. अगर आप इस इंतजार में होंगे कि कभी इन फ्यूचर इसको अब ट्राई करूंगा, यू विल नॉट फाइंड बहुत ज्यादा यूजफुल होगा. कि ज्यादा यूजफुल होगा अगर आप मेरे साथ जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ इनको साथ साथ अगर करते जाएंगे. दिस विल हेल्प यू मोस्ट. And as things come up, I'll keep telling you. I don't have any fixed agenda कि मैंने आज ये चीजें करानी है, but just to give you some brief ideas. हमारा जो so
न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, बाय द वे, इन आप में से कोई भी अगर ऐसा है जिसको हैज नो आइडिया एनएलपी क्या चीज होती है, मेरी वेबसाइट पे first-institute.com, first-institute.com, इस पे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, मेरे बहुत सारे कोर्सेज भी मिलेंगे आपको, और उनके साथ साथ मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं, छोटी छोटी वीडियोस भी हैं जिसमें आपको एनएलपी के बारे में खासी मालूमात मिलेगी। उसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे इस वक्त आप हैं, there are lots of videos, more than 400 videos, जिसमें आपको एनएलपी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंग्लिश में भी है। मेरा एक कंप्लीट प्रोग्राम है यूट्यूब पे, एनएलपी इन द लाइट ऑफ इस्लाम के नाम से। मेरी प्लेलिस्ट अगर आप चेक करेंगे, वहां पे यू विल फाइंड दैट इट्स अ 30 days प्रोग्राम, एंड यू विल लर्न a lot of things about NLP and about yourself. And NLP in the light of Islam, ये जो प्रोग्राम है पूरा का पूरा अंग्रेजी में है। मेरी पॉडकास्ट है, ये भी आपको मेरी प्लेलिस्ट पे यूट्यूब पे आपको मिलेंगी। वो उर्दू में है, उनको आप सुनेंगे, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी इंशाल्लाह। और उसके अलावा मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी एक प्रोग्राम है, और कंप्लीट आई थिंक विद 30 सेशंस से शायद ज्यादा ही उसके हैं। एंड इसी तरह से मेरी इंट्रोडक्शन टू एनएलपी के नाम से भी मेरे प्रोग्राम्स हैं मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर। गो एंड चेक देम, आपको ज्यादा तफसील से चीजें मिल जाएंगी। मैं आज के सेशन में उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुख्तसरन हमारा जो जहन है, इसमें जितनी भी मालूमात आ रही है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, वो हमारे इन 5 सेंसेस के थ्रू आ रही है, हवा से खमसा के थ्रू आ रही है। ओके, साइट, साउंड, टच, स्मेल, टेस्ट। हम जब कोई चीज कहते हैं मैं सोच रहा हूं, तो हम जब सोच रहे होते हैं तो हमारी वो जो सोच है, वो सोच भी इन्हीं 5 सेंसेस के ऊपर बेस कर रही होती है। हम सोच रहे हैं तो हमारे जहन में कोई तस्वुर चल रहा होता है, कभी हमारी अपने आप से एक डिस्कशन चल रही होती है, हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं, कभी हमें कुछ फीलिंग हो रही होती है, कुछ एहसास हो रहा होता है, और कभी कभार कुछ स्मेल और टेस्ट भी हो सकते हैं। लेकिन हमारी जो मेजर जो सेंसेस हैं, साइट, साउंड, स्मेल, टच, इसमें जो मेजर सेंसेस हैं, साइट, साउंड और टच, ये 3 सेंसेस हैं जो हमारे मेनली जिसके ऊपर हमारी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हो रही है। सो अगर मिसाल के तौर पे मैं अभी आपसे बोलूं कि कोई बहुत ही प्लेजेंट मेमोरी आपकी जिंदगी की, तो इट डजंट हैव टू बी रीसेंट, इट कैन बी समथिंग ओल्ड, इट कैन बी समथिंग रीसेंट, डजंट मैटर। बट इफ आई आस्क यू टू थिंक अबाउट समथिंग रियली प्लेजेंट, समथिंग रियली नाइस, कोई one of your treasured memories, something really good, and when you think about that, notice perhaps you have an image in your mind. Maybe you have an internal dialogue. You say, oh, what was the memory? हाँ, मैं यहाँ था या थी या यूं हुआ था और यूं हुआ था, इसने ये कहा था वहां पे, यूं हुआ था, इसने यूं हुआ था. And you may have an internal dialogue. Or thinking about that memory, triggers some feelings in you. And there may be some smells or tastes as well. But what you call a memory, okay, or even a thought, that thought has a certain way, there's a certain way in which you represent that thought to you. Now, here's an important thing in NLP. There is no right and wrong way of representing information. So you represent information to yourself in one way, and your brother, your son, your sister, your mother, your father, your husband, your wife, any other person may represent the same information in some other way. So it's not कि आपका अच्छा है या उनका अच्छा है, आपका जो भी ब्रेन का तरीका है वो आपका तरीका है, उनका जो भी तरीका है वो उनका तरीका है. So it's not about right and wrong, it's not about good or bad. So अगर आपके जहनों में इस किस्म का कभी सवाल आए, ये ज्यादा अच्छा है या मेरा अच्छा है या उसका अच्छा है या मेरा सही है या उसका सही है, there is no सही और गलत और right or wrong. ठीक है, just be clear about this. So, and as you think about that, tell me, do you have an image in your mind when you think of something really pleasant? Okay, you can type, so I would know that you're with me. You can press 1, okay, to say yes when I ask you this question. Okay, so do you have any images in your mind when you think of something really nice, something really pleasant? Just press 1 if that's the case.
Okay, so I see number of ones coming here. So I want you to try something. Okay, and remember, what you have in your mind right now is a thought. Okay, it's not, and आपकी जो feelings जो भी आपको होंगी, जो भी आपको अच्छा feel हो, आपको बहुत अच्छा ना feel हो, आपको जैसा भी feel हो, इसका ताल्लुक उस event से नहीं है. आपको ये हम हमारी जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो ये होती है कि हम ये समझते हैं कि हमारे साथ कोई फलानी चीज हुई, देयर इज समथिंग एक्सटर्नल टू अस दैट हैपेंड, जो हमारी इंटरनल फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है, या जो हमारी इंटरनल फीलिंग्स को चेंज कर रहा है, या बल्कि असल में हमारी जो फीलिंग्स हैं वो उस चीज से आ रही हैं, वो जो हमारे जहन में इस लम्हे में थॉट है. सो फॉर एग्जाम्पल, जब तक मैंने आपसे नहीं कहा था, most likely you were not thinking about this particular thing. But the moment I asked you to think of something nice, something really pleasant, you probably had a number of different experiences. आप उनमें से कोई एक आपने select किया and you started thinking about it. And as you started thinking about it, आपका जहन जो है उस specific memory के ऊपर focus होना शुरू हुआ. और जैसे आपका जहन उस चीज पे focus होना शुरू हुआ, तो और आप जितना ज्यादा उसके बारे में सोचते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स हैं उसके, अगर it's a pleasant memory, your feelings will get stronger. Now let's play with this. Okay, let's take this memory and let's enhance this. So I want you to notice, आपके जहन में जो image है, okay, how is this color or black and white? Just notice that. And आपके जो image है, is it a still photograph or is it like a movie? Somebody actually mentioned it's a movie. And it's for them. Remember, it's like, so one person can say, oh, it's a movie, another person say it's a still photograph. Both are correct. There is no right and wrong here. Okay. Another person may say it's a black and white picture. The other person may say it's a color picture, and both are correct here. There is no right or wrong or good or bad in this specific thing. So आपके जहन में जो image है, is it like something close to you, or is it away from you? Is it an image in your mind or movie in your mind, however you want to understand? This memory in your mind, is it like you are in it right now? So you're like seeing everything that you were seeing जब आप उस situation में थे? Or is it like आपके सामने जैसे एक film चल रही है और आप उस फिल्म को डिस्टेंस से देख रहे हैं, जैसे लाइक स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं? And just notice these things. You don't even have to answer this. Now, जो image है आपके जहन में, is it bigger than life size or smaller than life size or just as big as life size? जो image है, is it at some specific location in your mind, or is it just all around you? And if it is at any specific location, where is it? Is it like in front of you? Is it to the right or to the left? Or is it behind you? Or is it above you? Or is it below you? It's like, what's the location of this image, if it's at any specific location? And as I said, there is no right, wrong, good, bad. Okay, none of that. All we are doing right now is we are first understanding कि हम अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन को जो हम स्टोर करते हैं, सो ये जो प्लेजेंट इवेंट है आपकी जिंदगी का, ये इस वक्त हम उसको एज एन इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. तो जो हमने उस इवेंट की जो मेमोरी है, जो उसकी इंफॉर्मेशन है, उसको जो हमने स्टोर किया हुआ है अपने जहन में, तो हमने किस अंदाज में किया हुआ है, ओके, उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं. जब हमें इन एलिमेंट्स का पता चलता है तो फिर हम इनको, इट्स लाइक जैसे आपको खाने की रेसिपी पता चले, आपने यार इसमें जरा सा मसाला तेज कर दो और ये मसाला कम कर दो, ये गरम मसाला डाल दो और ये गरम मसाला कम कर दो, इसका नमक बढ़ा दो और इसका नमक कम कर दो, और मीठा बना रहे हैं तो मीठा बढ़ा दो और मीठा कम कर दो, बिकॉज दोज आर द एलिमेंट्स जो एक डिश को प्रिपेयर करते हैं. सो हमारी जो यहाँ पे खिचड़ी पक रही है ओके, इसके एलिमेंट्स क्या है, हम उसको समझने की अभी कोशिश कर रहे हैं.
And it's like हर एक की खिचड़ी मुख्तलिफ होगी. Okay, किसी का खिचड़ा होगा. So there is no right, wrong. Keep that in mind. Now, do you have any voices when you think of this? This is a really pleasant experience. And कितनी आवाजें? Is it like your own voice, or is it someone else's voice? Is it like multiple sounds हैं यहाँ पर? Now, it's possible that someone may not have any voices. But if there are any, I want you to notice कि आपके ज़हन में कितनी आवाजें? How many sounds do you hear? And if there are sounds, what is the location? Where are they coming from? Do they come from your right or your left? Do they come from the front or the back or above you, or do they come from below you? What's the source of the sound? And whose voices are these? Is it your own voice, or there are other people? Is there any music, any rhythm? इसकी volume कैसी है sound की? Is it high? Is it low? इसकी pitch कैसी? Is it high pitched, or is it deep, or is it medium pitch? Is it fast sound, as if कोई बहुत तेजी से बात कर रहा है, or is it like slow? Is there any rhythm in it? Just notice these things. Just notice. ये आवाज जो है एक कान में है या दोनों में? अगर एक में है तो किस कान में? आपके राइट में या लेफ्ट में? और अगर दोनों में है तो दोनों में बराबर है, या इक्वलाइजर से एडजस्ट करने की जरूरत है? Just check that. Okay. And now notice your feelings. And you think of this really nice, really pleasant experience. Okay. Where do you have those feelings? Okay. Where do you feel those feelings? Do you feel them in your chest, or in your stomach, or in your head, or your neck, your shoulders, or all over your body, or any specific part of your body? Where do you feel those feelings? What are you most aware of? Okay. And those feelings, do they move? And when they move, do they move up, or do they move down? Do they move, in one direction or the other direction? Like, do they move clockwise or anti-clockwise for you? Do they move forward or do they move backwards? Okay. If there is any movement, do they like expand or do they contract? Just notice that. Just notice. Now, is there any pressure? Is there any weight? Is there any like feeling of touch? You say tactile sensations. It's like, is there any feeling of touch in that? And are there any smells in it? Are there any, it's like, is there any aroma or pungence or fragrance of some kind? Is there any taste? कोई मीठा, कोई तीखा, कोई खट्टा, कोई कड़वा. It's like, is there any taste in it? Just notice that. Just notice that. Now, did you notice all of these elements? Let me know. Type 2 this time if you have noticed these elements. Now, even if you're watching recording of this, even if you're watching this recording, 10th time, that's okay. You can pick different experiences. And it's possible कि आपने एक pleasant experience को एक अंदाज से store किया हुआ, दूसरे को दूसरे अंदाज से किया हुआ. And it's perfectly okay. And but when you're doing it, as I'm asking you these questions, I want you to notice these things in your head. It will enhance your awareness. Okay, it will help you understand how you're doing what you're doing inside you. So, it's like मुख्तलिफ खानों की रेसिपीज मुख्तलिफ होती है ना, एक ही किचन में बन रहा होता है.
एक ही कुक बना रहा होता है, लेकिन हर खाने की रेसिपी जो है वो डिफरेंट होती है, इवन दो वही मसाले जो किचन में रखे हैं इस्तेमाल हो रहे होते हैं, लेकिन उन मसालों की कॉन्फ़िगरेशंस चेंज होने से मुख्तलिफ खाने तैयार होते हैं और उनके जायके तब्दील हो जाते हैं। सो इसी तरह हमारे जहन में मुख्तलिफ जो इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में स्टोर हुई हुई है, मुख्तलिफ अंदाज से उसको प्रोसेस करने से हमारे अंदर मुख्तलिफ एहसास आ रहे हैं। अगर हम इसको डीपर लेवल पे देखें तो हो ये रहा है कि हमारे जो ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस हमारे जो हैं, मुख्तलिफ कनेक्शंस एक्टिवेट होने से मुख्तलिफ यू नो पिक्चर्स हमारे कॉन्शियसनेस पे फॉर्म हो रहे हैं, और वो पिक्चर्स जब हमारी अवेयरनेस में, हमारी कॉन्शियसनेस में आती हैं, हमारा फोकस उन चीज़ों के ऊपर जाना शुरू होता है और हमारे अंदर उनसे रिलेटेड फीलिंग्स या एहसास आने लगते हैं। और वो जो एहसास होते हैं, हमें लगता है कि इट्स लाइक ये एहसास जो है ये मेरी जिंदगी में होने वाले फलाने इवेंट की वजह से हुआ है, ये फलानी चीज हुई थी। बिकॉज हम इंसान का जो ब्रेन होता है वो रीजंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो हम जब कोई एहसास हमें किसी चीज का होता है तो हमें कुछ और नहीं समझ में आता, तो जो मोस्ट लॉजिकल चीज हमें लगती है, और वो ये लगती है कि ये जो चीज हो रही है मेरी, क्योंकि ये फलाने इवेंट से पहले नहीं हुई थी, ये उस इवेंट के बाद हो रही है, तो लिहाजा ये चीज उस इवेंट की वजह से हुई, क्योंकि मेरे साथ फलाने शख्स ने इस तरह से बिहेव किया, फलाने शख्स ने मेरे साथ इस तरह से किया। बहुत साल से, तकरीबन 30 साल पहले की बात होगी। सब मैंने एनएलपी की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं की थी, मैं ऐसे ही मुख्तलिफ होम स्टडी कोर्सेज से मैं लाइक एनएलपी सीख रहा था, और वीडियोस के थ्रू मैं सीखता था। उस जमाने में ये यूट्यूब वगैरह नहीं होता था, और वो कोई वीडियो भी जो होती थी बड़ी लाइक किसी से, कहीं से, अमेरिका से, चाहे यूरोप से मंगवा लेते, और फिर उसको देख के बड़े बार बार उसकी प्रैक्टिस करते। वो छोटी सी मेरे पास एक प्रोग्राम था, आई डोंट इवन रिमेम्बर, 1 घंटे का, उसके अंदर कुछ चीजें थी ब्रेन कंट्रोल की, तो मैं उन चीजों को जस्ट लाइक प्रैक्टिस करता था। इट वाज अ होम स्टडी कोर्स के, तो मैं उसको प्रैक्टिस करता था। तो उस जमाने में मैं जॉब कर रहा था, मेरा एक कलीग थे, ही वाज सीनियर टू मी। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था एंड ही जस्ट केम एंड मैं अपनी कुछ कोटेशन बना रहा था अपने क्लाइंट को, मेरी सेल्स की जॉब थी, तो मैं अपने एक कोटेशन प्रिपेयर कर रहा था, मुझे नेक्स्ट डे सबमिट करानी थी एक क्लाइंट के पास। तो अब वो साहब आए, आके मुझसे कहने लगे कि लाइक कीबोर्ड मुझे दे दो। मैंने कहा, सर मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कोटेशन बनानी है। उनको मेरा ये रिस्पॉन्स इतना बुरा लगा, ही जस्ट स्टार्टेड शाउटिंग एट मी बिकॉज ही वाज सीनियर. Probably, I don't know if there was something wrong going in his life at that day, but he started shouting at me. And मैं यंग छोटा सा उनसे चुप करके मैं सुनता रहा। मैं बहरहाल अपना काम खत्म करके मैं घर आ गया। आई डोंट रिमेम्बर उन्होंने कीबोर्ड लिया नहीं, बट आई केम बैक। बट दैट नाइट, यानी ये इवेंट हुआ है समझो शाम को तकरीबन 6 बजे, एंड मेरे जहन में मुसलसल वो चीज चल रही थी, और 9 बजे, 9:30 बजे होंगे रात के, और मैं मुसलसल उसी चीज के बारे में सोच रहा था कि उन्होंने ऐसे बोला, वहां पे वो फलाना भी था, उसने भी सुना होगा, उसने क्या सोचा होगा, उसने मेरे बारे में ये लाइक, एंड थिंग्स वर गोइंग ऑन इन माय हेड। एंड इन दैट मोमेंट सडनली आई रियलाइज्ड कि ही इज नॉट हियर। आई एम फीलिंग बैड even though he's not here. I am feeling bad even though he's gone. I'm feeling bad not because of this person. I'm feeling bad because of what I'm doing in my head. So I started doing some changes inside my head. And I'll teach you some of those things today. So I made some changes. And I turned him, in my mind, I turned him into a clown. It's like his image, not him as a person, but his image in my mind. I turned him into a clown and gave him a big nose, and saw him in my imagination dressed up very funny. And I started smiling. I started feeling good. Next day, जब मैं ऑफिस पहुंचा, तो मेरे पास मोटरसाइकिल होती थी, मेरी सेल्स की जॉब थी, मैंने अपनी बाइक खड़ी कर रहा था, तो वो साहब सामने से आ रहे थे, एंड आई सॉ हिम, एंड व्हेन आई लुक्ड एट हिम आई सडनली सॉ a funny look on his face. It's like I imagined he has a big nose and he has big ears and he's dressed funny. And in my imagination, as I was seeing him, I was like feeling good. And I was feeling good. I was smiling. And when he was coming, वो मुझे देख रहे थे और मैं उनकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था. He came to me and he said, Kamran, yaar, I'm so sorry.
मैंने कल तुम्हारे साथ ऐसे बोला था, and I said, no, it's okay, कोई मसला नहीं, I understand. And I was still smiling. So, I didn't spoil a relationship. I didn't spoil my time. I handled that, memory very easily. And I learned a very important lesson. Okay. And this is before I had any formal NLP training. So these things can happen. Okay. So coming back to your pleasant experience, let's play with this. आपके mind में जो भी image है, I want you to try something. I want you to take that image, it's like whatever is the size, whatever it may be right now, I want you to make it bigger, increase the size, make it bigger and bigger and bigger, and even just like, make it really big. And as you do that, notice what changes you experience. Does the feeling get stronger or does it get weaker? For most people, when they make an image bigger in their mind, their feelings get stronger. Okay. Now, I want you to bring it back to whatever its original size was. And then I want you to make it smaller and smaller and smaller and smaller. Okay. And make it half the size and even smaller than that, even smaller and even smaller. And notice when you make it smaller, what changes you experience. For most people, when they make an image smaller, the feelings get weaker. Okay. Now bring it back to whatever its original size is. Okay. So notice if this is a color image or a black and white image in your mind. If it's a color image, I want you to imagine as if like you have a remote controller in your hand, and then this remote controller say you are making those colors richer and richer and really rich. It's like make that image 4K image and really rich in color. And notice what happens. For most people, when they make an image colorful in their mind, their feelings get stronger. Then with that remote controller, I want you to bring it back. So colors को आहिस्ता आहिस्ता वापस उसके normal जो था उसी पे ले आइए. Now some people say, no, I don't want to bring it. Just go ahead and do it. And there's a reason I'm asking you to do this. So bring it back. Okay. And then I want you to turn it into black and white. So it's like colors जो है वो रंग फीके पड़ते जा रहे हैं. It's like आहिस्ता 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 आप उसको black and white करते जा रहे हैं. So it's like just make it from color to black and white. And just notice when you make it black and white, what happens to your feelings? Do feelings get stronger or do they get weaker? ज्यादातर लोगों के लिए जब वो इमेज अपने जहन में जो इमेजेस हैं उनको ब्लैक एंड व्हाइट बनाते हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो कम हो जाती हैं. ना वापस उसको इसके जो ओरिजिनल कलर है इस पे ले आइए. ना अगर फर्स्ट करोगे किसी का इमेज था ही ब्लैक एंड व्हाइट, आप उसको कलर करके देख सकते हैं. ओके. देन आपका जो इमेज है, it's like notice uski location, is it very close to you or is it away from you? If it's close to you, I want you to imagine as if like you are pushing it away from you. It's going farther and farther and farther and farther away from you. आपसे दूर जा रहा है. इसका जो डिस्टेंस है उसको वो दुगना कर दीजिए. सो अगर फर्स्ट करो किसी का चेंज के उस पे था, सो मूव इट सो इट्स लाइक तकरीबन आपसे 1 फीट दूर है. अगर 1 फीट था सो मूव इट एज इफ इट्स लाइक 2 फीट दूर है. सो एंड नोटिस
व्हेन यू मूव इट, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो बढ़ती हैं या कम होती है? ज्यादातर अफराद के लिए जब वो अपने इमेजेस को दूर करते हैं तो उनकी फीलिंग्स कम होती हैं। एंड देन उसको वापस अपने करीब ले आई जहां पर वो था, उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे। नाउ देन ब्रिंग इट, उसको अब जहां पर है वहां से उसको अपने करीब लाना शुरू कर दीजिए, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, और आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्कुल अपने चेहरे के सामने यहाँ पे। एंड जस्ट नोटिस कि जब आप उसको इतना करीब लाते हैं तो आपकी फीलिंग्स स्ट्रांग होती हैं, वीक होती हैं। Now, इसमें भी एक पॉइंट तक आते आते जनरली स्ट्रांग होती हैं और मेजॉरिटी लोगों के साथ, और फिर एक पॉइंट पे आने के बाद वो स्टिल हो जाती हैं। समटाइम्स दे कीप ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ पे कोई सही या गलत नहीं है, everyone is different. Okay, so जहां पर भी just move it back wherever the image is. Okay, just leave it where it is. Yeah. Now let's play with some of those sounds in your mind. एक चीज और करते हैं, जो इसकी इमेज है, इसमें इमेज में अगर आप वो कुछ देख रहे हैं जो कुछ आप देख रहे थे जब आप उस सिचुएशन में थे, एज इफ लाइक आप सब लोगों को देख सकते हैं, आप अपना चेहरा नहीं देख सकते बट इर्द गिर्द तमाम लोगों को देख सकते हैं। okay? जैसे आप इस वक्त इस लम्हे में मौजूद हैं, जब आप उस मेमोरी के बारे में सोचते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप वहां पर मौजूद हैं। अगर ऐसा है तो तस्वीर कीजिए कि जैसे आप उसमें से बाहर निकल कर आपके सामने फिल्म चल रही है, आप उसको स्क्रीन पर देख रहे हैं, एंड यू आर वॉचिंग इट फ्रॉम द आउटसाइड। ओके, इस चीज को हम एनएलपी में डिसोसिएशन कहते हैं। ये जो आपकी मेमोरी थी वो एसोसिएटेड मेमोरी थी कि लाइक आप उसके अंदर मौजूद हैं। जब मैंने आपसे कहा कि उसको बाहर निकल के इसको जैसे देख रहे हैं तो आप सब कुछ आपके सामने फिल्म चल रही है। शादीशुदा अफराद जिस जब आपकी शादी में आप दूल्हा या दुल्हन बन के बैठे हुए थे और जब आप अपनी शादी की मूवी देखते हैं तो वो दोनों में डिफरेंट एक्सपीरियंस है ना, आई होप। ओके, so just imagine you're seeing it from the outside and it's a movie आपके सामने चल रही है, and just notice what happens. For most people, जब वो किसी एक्सपीरियंस से डिसोसिएट होते हैं तो उनकी डिसोसिएशन से उनकी फीलिंग्स कम होती है। ओके, और अगर आप ऑलरेडी डिसोसिएटेड थे, आप ऑलरेडी इसको बाहर से, सो जस्ट इमेजिन दैट यू आर स्टेपिंग इन टू दैट मेमोरी। ओके, सो यू आर सीइंग जो उस वक्त हो रहा था, एंड नोटिस व्हाट हैपेंस टू योर फीलिंग्स। ज्यादातर लोगों के साथ जब वो उस एक्सपीरियंस में दाखिल होते हैं, यानी उसके साथ एसोसिएट होते हैं, तो इस एसोसिएशन से फीलिंग्स स्ट्रांग होती हैं। बाय द वे, इट्स लाइक दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हो जिनके साथ आपका बहुत क्लोज एसोसिएशन रही हो, आप बहुत करीब उनके साथ रहे हो, तो आप उस कुर्बत की वजह से आपको उनके साथ कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग, बड़ी दोस्ती और बड़ी इट्स लाइक फ्रीक्वेंसी मिलती थी। बट फॉर सम रीजन अगर वो कहीं बाहर किसी दूसरे शहर चले गए, आप कहीं और चले गए, आप में सेपरेशन हुई, आपका डिसोसिएशन हो गई, उसके बाद आप उसी दोस्त से काफी अरसे बाद जब मिलते हैं, यानी लिटरली शायद ऐसा होता हो कि कभी आप उसके साथ रोज मिल रहे हैं और बातें ही नहीं खत्म होती हैं, घंटों बातें करते रहते हैं और बातें खत्म नहीं होती हैं, बातों से बातें निकलती रहती हैं, और अब बहुत अरसे के बाद मिले हैं। अब तो बहुत सारी बातें जमा हो जानी चाहिए थी इस दोस्त के साथ बात करने के लिए, लेकिन जब बहुत अरसे बाद आपकी उससे मुलाकात हुई तो शायद 10 मिनट की सलाम दुआ के बाद और और यहां पर बात आ जाती है। व्हाई इज दैट? बिकॉज जब आपका डिसोसिएशन उसके साथ हुआ, सो जो सारे कनेक्शंस थे वो खत्म होने शुरू हो गए। दिस इज अ वेरी पावरफुल डिस्टिंक्शन, इसको अगर आप समझें। अभी हम इस पे पर आते हैं। अभी अभी हम खाली इस वक्त जो एलिमेंट्स हैं, इट्स लाइक हाउ यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर ब्रेन राइट नाउ, इन चीजों को भी समझ रहे हैं। सो नाउ पे अटेंशन टू द वॉइसेस, और आपके जहन में जो भी आवाजें हैं
कितनी आवाज है? एक से ज्यादा? अगर एक से ज्यादा है तो उसको एक आवाज, जस्ट इमेजिन कि वो एक आवाज कर दिया आपने। और अगर एक ही है तो add more voice sounds to it. नोटिस की वॉल्यूम क्या है। फर्स्ट करो आपके पास एक नॉब है, आप उस नॉब को घुमाते हैं, एक तरफ घुमाते हैं वॉल्यूम बढ़ती है, दूसरी तरफ घुमाते हैं वॉल्यूम कम होती है। इफ यू जस्ट मूव इट, so उसकी वॉल्यूम को बढ़ाएं, एंड नोटिस आपकी फीलिंग्स में क्या फर्क आता है। एंड इफ यू मूव इट इन द अदर डायरेक्शन, उसकी वॉल्यूम को कम करें, एंड नोटिस आपकी फीलिंग्स में क्या फर्क आता है। एंड देन जस्ट लीव इट वेयर इट वाज। नाउ नोटिस आवाज एक कान में है या दोनों में। सो अगर एक में है, और अगर लेट्स से आपके राइट कान में है, तो मूव इट सो यू कैन हियर इट इन इट्स लाइक जैसे फोन इधर से लगाया हुआ था, अब उधर से उठा के इस कान पे लगा लिया। ओके, सो अब आवाज इस कान में। और अगर इस कान पे था तो यहां से उठा के इधर लगा दिया, सो नाउ इट्स इस कान पे। ओके, और अगेन अगर एक कान में थी तो यू कैन इमेजिन कि अब आपने उसना ब्लूटूथ वो लगा लिए, आईपॉड्स लगा लिए, नाउ यू हैव इट इन बोथ ईयर्स। ओके, और अगर ऑलरेडी दोनों में थी, सो एक आईपॉड का एक साइड का आईपॉड निकाल दें, सो इट्स लाइक यू हियर इट इन दिस वन ओनली, एंड देन इसको लगा लें, फिर ये वाला निकाल दें, एंड देन हियर इन दिस वन ओनली, अगर दोनों में थी। एंड एज यू डूइंग दिस, नोटिस आपकी फीलिंग्स में क्या तब्दीली आ रही है। आपका जो एक्सपीरियंस है, नॉट जस्ट फीलिंग्स, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस इस प्लेजेंट मेमोरी से रिलेटेड, उसमें क्या चेंज आपको फील हो रहा है, क्या तब्दीली आपको महसूस हो रही है। ओके, एंड देन जो भी उसका ओरिजिनल कंडीशन थी, ब्रिंग इट बैक विद। नाउ notice your feelings. Okay, where do you feel those feelings in your body? Do you feel them in your stomach, in your chest, wherever you feel them? Okay, notice where those feelings start. Notice, do they move up or do they move down? Do they move forward? Do they move backwards? Do they move, clockwise, or do they move anti-clockwise? It's like, how do they move for you? What's the movement in those feelings? Now, focus on those feelings. In your mind, give them any color you like. And unki jo movement hai, you may want to close your eyes as you do this. Just follow my instructions and focus on those feelings. And iski jo original movement hai, uske upar focus karte hue, it's moving. If it is moving like this forward, I want you to move it a bit faster. Speed it up, speed it up, speed it up, speed it up, speed it up. Okay, so it's like जैसे आप गाड़ी की पहिए, it's like एक्सीलरेटर पे आपने पैर रखा है, स्पीड जो है वो बढ़ती चली जा रही है. So you speed it up, इसको तेज करते जाए. Spin it faster, 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 faster. Keep it spinning faster and faster, faster and faster, faster and faster, even faster than that, even faster than that. As you spin it, notice that feeling is spreading. Keep it spinning faster and faster, faster and faster. Okay, cool. For most people, when they do it, they find unki jo achhi feelings and they're spreading, they're increasing. Okay, but I don't want you to feel too good. Okay, I want you to do something else now. I want you to slow it down. Start slowing it down. It's like, yeah, आप पैर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक पे रख रहे हैं, तो अब गाड़ी जो है वो स्लो होती जा रही है. So that feeling is slowing down. Okay, and slow it down, and then slow it down, and then just stop. And then, it's like अब आपने reverse का gear लगा दिया. So your feelings, and they are slowly moving in reverse.
and moving in reverse, and in reverse, and moving and moving. That's right. Keep it spinning in the opposite direction, and then speed it up, reverse may, speed it up, reverse, speed it up, speed it up, speed it up, speed it up, faster and faster, faster and faster in reverse, faster and faster in reverse, faster and faster, faster and faster, faster and faster, faster and faster, faster. Okay, and then just notice your feelings. You may find when you move it in reverse, feelings change. Okay, stop. Okay, and then gradually wapas move them forward. Okay, move them forward. And जो उसकी original movement थी, जो उसकी original speed थी, just bring it to that. Okay, and leave that. So, you know what you have just done, what you have just learned? You have just controlled your own brain. You have just run your own brain. That's what you were learning. Okay, now हम जो भी हमारी फीलिंग्स है, अब आप एक चीज सोचिए, अगर आपको इनमें से कोई भी चीज करके आपकी फीलिंग्स बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, आपको फीलिंग्स में स्ट्रांग हुई या वीक हुई, there was no one else who was doing it. You are the one who is doing it. It's not किसी ने आकर आपकी फीलिंग्स को स्पिन करना शुरू कर दिया, किसी ने आपकी माइंड की पिक्चर्स को बड़ा कर दिया. You did it yourself. You are the one controlling it. You are the one doing it. Okay. So Maria has, I see you have, there's a question here. It says, when you make images smaller, feelings diminish, right? There is no right or wrong here. There is no right or wrong. If you are attending it carefully, I told you this, there is no right or wrong. Okay. For different people, it's different. Okay. This is like, chai mein चीनी के बगैर चाय पीनी चाहिए, राइट? या चीनी के साथ पीनी चाहिए, राइट? ओके, चीनी 1 चमचा होना चाहिए, राइट? और या 2 चमचे होने चाहिए, राइट? ओके, it's different for every person. Okay, your own preference. So I don't have any right or wrong. I don't have any answers to that. So now let's do it. Let's do something else with this. अभी हमने एक pleasant experience के साथ किया है. Okay, let's pick something unpleasant. Okay, we all want to get rid of unpleasantness in our lives. Okay, so I want you to think about something which is, and by the way, when you're doing this, even if you're doing this on your own and watching this recording the 10th time, when you're doing it, यहाँ हमारा मकसद जो है, keep this in mind. I'm not doing therapy. I'm not in front of you. So you are responsible for your own experiences. अगर आप मेरे सामने हो and we, if we are working on some specific issue, then I can customize these things for you, और specifically आपके लिए मैं इसको tailor कर सकता हूँ. लेकिन इस वक्त, आप, मुझे नहीं पता आप किन चीजों पे कर रहे हैं, and honestly, I don't even know who you are. Okay, so please do not pick anything major. Okay, so जब मैं आपसे कोई unpleasant, pick something which is unpleasant for you, but not something major in your life. Okay, so अगर मिसाल के तौर पे a major event, an unpleasant event could be the death of a loved one, could be a unpleasant experience, or a major unpleasant experience for anyone. So I don't want you to pick anything like this, but mildly unpleasant. Okay, so आप किसी मीटिंग में जा रहे थे और आप पुलिस ने रोक लिया, चालान हो गया, and that was like not a pleasant thing, but कोई ऐसा नहीं हुआ कि जिंदगी खुदा ना खास्ता उससे जी 500-700 रुपए का एक नुकसान हो गया, but nothing more. So I want you to pick something which is mildly unpleasant for you. Okay, and when you do that, notice, do you have an image in your mind? Do you have one image or more than one images? Is it a color image or a black and white image? Is it a moving image or a still photograph?
Is it bright or dim? इमेज जो है ये आपसे करीब है या आपसे दूर है? इमेज जो है लाइफ साइज है या बड़ा है लाइफ साइज से या छोटा है? ये किसी एक खास सिम्फ में है आपके जहन में, किसी एक खास लोकेशन पर है, सामने, राइट, लेफ्ट, पीछे, ऊपर, इस टाइप, या इज इट समथिंग विच इज ऑल अराउंड यू? ये अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस की जो मेमोरीज का जो इमेज आपके जहन में है, इज इट लाइक आप वहां पर मौजूद हैं और वो कुछ देख रहे हैं जो उस अनप्लेजेंट सिचुएशन में हो रहा था, या इज इट आप बाहर से देख रहे हैं, वो मेमोरी आपके सामने एक फिल्म की तरह से चल रही है? हाउ इज इट? Now, is there any voice in this unpleasant experience? किसकी आवाज है? कैसी आवाज है? इज इट एक है या एक से ज्यादा है? एक कान में है या दोनों में है? अगर दोनों में है तो दोनों में बराबर ही है, एक में कम एक में ज्यादा है? और अगर एक में है तो किस कान में है, राइट में है या लेफ्ट में है? And notice those feelings in your body. Where do you feel those unpleasantness? Do you feel any weight or any pressure or any sensation? Is there any smell, any aroma, any pungence? कोई taste है इसके साथ? खट्टा, मीठा, नमकीन? Just notice this. Okay. Again, these are the elements of this unpleasant experience. Okay. Now let's do something. I want you to take this unpleasant experience, unpleasant memory. The first thing I want to do is, I want you to, agar if you are seeing what you were seeing when you were in that image, the first thing I want you to do is step out of it. Imagine as if आपके सामने film है and you're watching it from the outside. And अगर आप already ऐसा ही है कि आप इसको बाहर से ही देख रहे हैं, okay, leave it that way. Then I want you to, uska jo bhi size, I want you to, start making it smaller and start pushing that image away from you. Okay. Push it up farther and farther and farther and farther away. And आप देखेंगे जैसे जैसे आप उसको पीछे कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, वो image automatically छोटा भी होता जाएगा. Okay. But if, as you're doing it, कि आप उसको अपने ज़हन में छोटा भी करते जाएं और दूर भी करते जाएं. And push it way far away. And as you're doing it, imagine उसका जो color है वो भी black and white होता जा रहा है. Okay. It's going farther and farther and farther. Way far. दूर कहीं. Okay. And then उसका जो volume था उसको बंद कर दें एकदम. And notice your feelings. For most people, when they push an image away from them and make it smaller, उनकी जो feelings होती हैं, they change. They literally diminish. Let me know how it goes for you. Let me know how it goes. Did you notice आपकी जो unpleasantness है, that has decreased? Type 1 if you feel that unpleasantness has decreased. And type 2 if you don't feel any difference.
So I see some people saying my feeling decreased, feeling relieved, no feeling. जो stress पैरों में feel हुआ वो release हुआ. And then I see a couple of ones. Okay, it's decreased. Okay. I see someone saying 2, that means no change. For other people, I see 1, 1, 1, 1. And that is an indication that the feeling has changed for you. Okay. And so for most people, this is how it works. So जब हम किसी भी इमेज को अपने आप से दूर करते हैं, उससे बाहर आते हैं, हमारी उससे रिलेटेड जो फीलिंग्स होती हैं वो कम हो जाती हैं. Okay. So the next time when something unpleasant happens or an unpleasant thought comes to your mind, rather than complaining or rather than worrying कि जो वो हो गया था, उसने मेरे साथ यूं हुआ था, मेरे बचपन में ऐसा हुआ था, realize this, it's not कोई चीज बचपन में हुई थी, it's not कोई चीज कल हुई थी, it's not कोई चीज किसी और ने कही थी जिसकी वजह से आपको फील हो रहा है. It's के आपके जहन में इस लम्हे में आप जो कर रहे हैं. ओके. तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत पड़ती है वो तुम्हारे अपने हाथ की कमाई है. कभी गौर किया, अल्लाह ताला कुरान में हमें ये नहीं कह रहा, अल्लाह ताला के जो तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत पड़ती है, जो तुम्हारी सारी टेंशन है, इसकी वजह वो तुम्हारा पड़ोसी है. ओके. वो लोग हैं जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे अपने हाथ की कमाई है. हम जब हम इस माइंडसेट के साथ ऑपरेट करते हैं कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है, मैं उसका जिम्मेदार कोई दूसरा है, ये माइंडसेट जब एंड देन वी स्टार्ट प्लेइंग ब्लेम गेम्स, कि फलाने ने यूं किया, फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने वैसा किया. समटाइम्स वी से कि किसी शख्स के ऊपर, एंड समटाइम्स इट्स नॉट अ शख्स बट इट्स जस्ट आवर ओन मेमोरीज. ये मेरे बचपन में ऐसा हुआ था, मेरे साथ फलाना वाकया हुआ था, मेरे साथ फलानी सिचुएशन हुई थी, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है. तो जब हम ऐसा कर रहे होते हैं, हम एक पैसिव मोड में आ जाते हैं, और एज अ रिजल्ट, बिकॉज एक चीज को या तो कोई दूसरा कर रहा है या कोई ऐसी चीज है जो हो चुकी है मेरे बचपन में, मुझे उस पर कोई इख्तियार ही नहीं है, और हम फिर अपने जहन के गुलाम बनने शुरू हो जाते हैं. okay? Mind mastery, you are a master of your brain, not a slave of it. So if there is something going on in your head and you have a feeling, realize this. Whatever your feelings are, they are not because somebody did something or said something or something happened in your life. It is because something you are doing, not consciously, but something you are doing. You do not have a control over आपके जहन में कौन सी thought अचानक से पॉप अप हो गई. अरे इट्स लाइक वी डोंट हैव अ कंट्रोल कि आज रात को मैं ख्वाब में किसको देखूंगा और क्या देखूंगा, या देखूंगा भी या नहीं देखूंगा. ख्वाब होता है, वो किसी भी तरह से आ सकता है. सो हमारे जहन में क्या सोच आ जाए, किस चीज से रिलेटेड आ जाए, बैठे बैठाए कोई चीज ट्रिगर हो जाए, हमें उस पर हमेशा कोई कंट्रोल नहीं होता. लेकिन जो चीज मेरे जहन में इस वक्त आई है, वो चीज मेरी इस करंट कैफियत के ऊपर असरअंदाज कर रही है, और उस कैफियत को मैंने तब्दील करना है. उसके लिए मैंने क्या करना है? नाउ यू हैव सम टूल्स. ओके, लेट्स टेक इट फर्दर. Maybe we can take a short, quick break, and then inshallah we will continue. Okay, so let's take a quick break. जब इन चीजों को करते हैं, तो अगर आप मेरे साथ लाइव क्लास में हो, आई विल गिव यू अ ब्रेक, डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेक, लेकिन क्योंकि हम ऑनलाइन इसमें, so we'll take a short, maybe just a 2-minute break. I'll play a commercial for you. Okay, just to just for the sake of taking a break. Okay, so Hello, this is Dr. Richard Bandler. This is John Laval. I'm the president of the Society of NLP with Richard Bandler. Hi, I'm Owen Fitzpatrick, co-author of the book Memories with Dr. Richard Bandler and co-founder of the Irish Institute of NLP. And I'm very delighted to highly recommend Kamran Sultan of the First Institute of Dynamic Learning in Pakistan. Kamran is someone that I've seen train. I've worked with him and taught a workshop with him in Pakistan.
and he's someone that has exquisite skills, one of the best NLP trainers I've seen, and it's an honor to work with someone of his caliber. The thing about Kamran Sultan, he is fantastic, and I highly recommend him for doing his seminars in your country. And I also want to say that he's been doing NLP for quite a long time, actually. Was trained by Richard many, many years ago. He's come to the United States to update his training, and he's really a great guy. If you've got the opportunity to study with someone like him, like Kamran in Pakistan, in NLP, you won't find any better. So I highly recommend, if you want to learn NLP, learn from the best in Pakistan, learn from Kamran. Okay? So, go see Kamran Sultan. He's a great guy, and he does fantastic programs. And if you're getting training in Pakistan, I want to recommend that you train with Kamran. All right, welcome back. So ये जो हम ब्रेक लेते हैं इसके पीछे थोड़ी सी आपको लॉजिक समझा देता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड दिस। देखो जैसे इट्स लाइक जब आप कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद आपको एक इंस्ट्रक्शन आती है, क्या होती है? रीस्टार्ट, रीबूट। ओके, सो जब आप उसको रीबूट करते हैं सो आपका जो सिस्टम होता है वो एडजस्ट होता है। ओके, सो जब व्हेन यू डू दीज एक्सरसाइजेस on your own, it will help you if you give yourself that, you create that space by doing something different. Okay, taking a break.